Morning once again. These are the helpline numbers we have, and in case you have any queries later on, you can get in touch with them. These are just informations. And see, today's meeting we have agenda. We will start. We started with the prayer sharp at 8 a.m. I will be shortly handing it over to Swamiji, and for him to speak, and then of course take us forward in something which we call it as yoga for life. And then we will have a experience sharing at 8:40, and 9 a.m. we have a special guest. She's I'll be introducing her once we reach at 9 o'clock, and then of course we'll be closing it at 9:30. This is the schedule for today. For the yoga practice, there are certain things what you need to follow. So I'm sure you are aware because we did it the last time. And in case you are not, please get in touch with us back again at the helpline, which I'll be posting in the chat box, and you can have a look at it. I will now hand it over to Swamiji to take the yoga for life forward. Thank you, Swamiji. Namaskar. Thank you, Anirban and the Cerimet team, the Reach Healthcare team, for this wonderful platform where we all, the healthcare providers, the diabetic champions, and their parents, along with the well-wishers, are able to get connected with each other sitting comfortably at our home. My dear diachams and their parents and the esteemed guests, we are very happy to share you that Ramakrishna Mission Kankal Haridwar, which is a 200-bedded charitable hospital, started in the year 1901, which has a legacy of more than 120 years, is serving in the field of medicine as taught by Swami Vivekananda, Atmano Mokshartham Jagadhitaya cha. So with this foundation, now we have got many more such great organizations who have become part of such a noble service. Atmano Mokshartham Jagadhitaya cha, for the salvation of oneself by doing good to the world. Shiva Bhave Jiva Seva, serving the God in living man. Nar Seva hi Narayan Seva. Manav Seva hi Madhav Seva. All these philosophical or great ideals put in practice, called practical Vedanta. So there are many more people, organizations who have joined this noble cause. Institutions like CMC Vellore, institutions like AIMS, All India Institute of Medical Science Rishikesh, KLE Belgaum, and endocrinologists from different places in India and outside India. With the combined effort, we are able to get connected with each other to share something, to learn something which will make our lives a better one. This journey of ours started 10 years back, and now we have a team in which people have joined from different places in India and outside India. So this 10 years was very
meaningful and fruitful, where we have more than 300 type 1 diabetic children living a happy and healthy life, who have registered their names in the diabetic clinic at Ramakrishna Mission, Haridwar. Similarly, we have CMC Vellore, which is serving the type 1 diabetic community, and I am sure they have got more than 500 type 1 diabetics. Similarly, KLE Belgaum, which is a medical college in Karnataka, I am sure they also have more than 500 type 1 diabetic registered. And many more individual doctors from India and outside India also have the type 1 diabetics who have become part of this wonderful program. It's a journey which we have to go together. So, we will be meeting once in a month, every month last Sunday, 8 a.m. The purpose of shifting the time from 10 to 8 was we can start doing yoga pranayama together, which can provide integrated wellness, integrated medicine for wellness. Definitely, in type 1 diabetes, insulin has a role to control the blood sugars, but at the same time, understanding and practicing all the good habits for a healthy life. DSME, Diabetes Self-Management Education. We should know our diet, we should know how to take insulin, we should know how much insulin we should take, we should know what is hypoglycemia, what are hyperglycemia, what are sick days rules, what is the role of exercise, what is the role of yoga, pranayama. So all these things we have been learning and talking. Today, we shall together start yoga session for the next 20 minutes or so that we will go and have many more people to share their experience and guest speakers to speak. So, I request all our diabetic children and parents and even my guests, if you can all join us for this yogic session. Naresh from SeridMed is ready with me to do yoga session. So, in the yoga, usually we do in the beginning the warm-up exercise. We call it as yogic jogging. So, wherever we are there, we can have running. Focus is on the breath, body mind free. मस्ती में मजे में दौड़ना है. Focus is on the breath. Yogic jogging improves blood circulation, improves the oxygen supply to every cell of your body. Focus is on the breath. और थोड़ा हाथ ऐसा फेंको. Yogic jogging. Then breathe in, breathe out. Forward, backward bending. To reduce the central obesity, to activate every cell of your body, to feel the energy, we must practice yogasana, pranayama. Then sidewise bending. Look at Naresh and keep on doing.
Then jump. Breathe in, jump. Breathe out, relax. Then so after doing yogic jogging, now let us go and do some Sukshma Vyayamas. Provide exercise for all the joints. Very good exercise for osteoarthritis of the knee. Pull, push, pull, push. Focus is on the breath. Then exercise for the ankle joint. Breathe in, pull, breathe out, push. Exercise for the ankle joint. Then ankle rotation. Body mind relaxed. Exercise for the joints, ankle joint, knee joint, then wrist. So all the joints should be given proper exercise. Improves the oxygen supply, to improve the blood supply, to be free from all sorts of pain. Sukshma Vyayama, wrist joint, then elbow joint. Neck. Sukshma Vyayamas to free down all sorts of joints. Therapy for all sorts of pain. शरीर का हर एक अंग को व्यायाम करने से शरीर में कहीं दर्द नहीं रहेगा. Proper exercise for every part of our body makes our body fit, free from all sorts of diseases. Understanding the science and practicing. Yogic jogging, Sukshma Vyayama. After this, putting forces in the opposite direction to make your muscles around the neck strong. Strong muscles make your body strong. Now, let us practice few asanas, especially those asanas which help us for managing our blood sugars properly. So, sit in Vajrasana. Bend your knees, sit in Vajrasana. Breathe in. Make a fist, put on the abdomen muscles, bend forward.
Mandukasana, frog posture. Mandukasana helps in diabetes management. How? We are putting pressure on the abdomen wall, thereby pressure on the pancreas, which helps to stimulate the pancreas to produce insulin, to reduce the insulin resistance, thereby reducing central obesity. Mandukasana is very helpful in managing blood sugars. Breathe in, make a fist, breathe out and go forward. So stay here in this posture, Mandukasana, frog posture, for 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Practice Mandukasana daily. Similarly, Shasakasana. Breathe in, go back, go front, touch your forehead and palms to the ground. Shasakasana. Rabbit posture. Again, very good asana for managing blood sugars, diabetes. Shasakasana. Now practice Ustrasana. Sit on your knee. Try to touch your right hand to your right ankle, heel. Push your trunk to the front. Very good exercise again for the management of diabetes and low backache, cervical spondylosis, wrong sitting postures can be corrected by doing Ustrasana. This is Ustrasana. All the yoga asanas, the yoga postures help us to make our muscles strong, provide exercise to every cell of our body, every organ of our body. Integrated approach for the management of type 1 diabetes is the goal of every diabetic champion. So Yogasana has a great role for all of us. Now Vakrasana. Keep your both legs straight. Fold your left leg. Put your right hand up. Try to touch your left feet or right knee with your right hand by crossing like this and twist to the left. Look back. Vakrasana. Twisting at the abdomen. Twisting the abdomen. Again helps to provide good exercise for the pancreas. On the other side, fold the right leg, lift up the left hand, go and fold the left knee, touch the left, twist to the right. Vakrasana. So all these asanas can be found in YouTube, where they will explain every step in detail. So to make it simple, I would like to say all of us must practice these asanas. Along with this, if you can practice Surya Namaskara, it will be really good. I'll just show in brief Surya Namaskara, how to do Surya Namaskara. Stand,
Surya Namaskara Asana. Fold your hands, breathe in, go back, breathe out, go to the front, step back left, stretch up, the other leg back, touch your knees, chest, chin to the ground, breathe in, go up, left leg to the front, Surya Namaskara. If practiced, it provides exercise to all parts of the body. King of all asana, Surya Namaskara. So, if you practice daily 10 times, 20 times Surya Namaskara, it provides exercise to all parts of your body, king of asanas. After practicing these important asanas, now let us go and practice pranayama. Pranayama helps to make our breathing properly, so that our vital energy, prana shakti, circulates properly. Many of the disorders are due to improper prana shakti reaching the cell. So, pranayama has immense health benefits. The asanas make our muscles strong, improve the blood supply, increase the oxygen supply. Pranayama helps in circulating the prana shakti properly, thereby better blood supply and oxygen supply to every cell. So, let us practice pranayama, anulom vilom, alternative nasal breathing. Close your eyes, close your right nose, close your mouth, breathe in through left nostril. Close your left nostril, breathe out through right. Breathe in through left, right, then breathe out through left. Alternative nasal breathing. Breathe in through left nostril, breathe out through right, then breathe in through right, breathe out through left. हमको जो है नासिका से अल्टरनेटिव ब्रीदिंग करना है, इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम. अनुलोम विलोम helps to balance the prana shakti. Thereby, we have also proven results that it helps in managing anxiety, depression. Yes, sir. So, alternative nasal breathing, anulom vilom. Alternative nasal breathing, anulom vilom, has proven health benefits. It relieves all sort of mental stress, thereby is a treatment for anxiety and depression. It helps to improve your nasal health, ENT problems, and balances the prana shakti. Now let us practice Bhastrika. Breathe in, breathe out. Expand your chest and completely exhale. Bhastrika, to improve your lung health, increase the lung capacity, increase the immunity. It's the greatest vaccine against corona in this corona period. Bhastrika.
Bhastrika. Then Kapalbhati. Kapalbhati can be called as king of pranayama. King of pranayama. So, place your left hand on the nabhi, navel region. Tuck in your stomach. Automatically the air will be pushed out. And when you relax, the air enters. They say, the moment you press your stomach, air goes out. And when you relax, automatically air enters. So, it is a very good abdomen exercise, providing very good exercise for all the internal organs, liver, spleen, pancreas, intestine. For healthy internal viscera, Kapalbhati. Close your eyes, focus on the navel, nabhi, tuck in your stomach. Kapalbhati is very good exercise, pranayama for better management of blood sugars, for reducing central obesity. Thereby, Kapalbhati can be a therapy for managing diabetes. Kapalbhati. Yoga is therapy for metabolic disorders. Ujjayi pranayama for all sorts of throat problems, thyroid problems. Ujjayi pranayama. Hold your throat tightly and breathe in. Ujjayi pranayama is a very good pranayama for all sorts of throat problems and other problems like thyroidism. Then Omkara. Omkara is the symbol of God. Omkara is the symbol of highest energy, the spiritual energy. Energy which can be neither created nor destroyed. That energy which runs this universe, runs this body and mind. By practicing Omkara, we get connected with the highest energy. Energize yourself. Find your true nature by chanting Omkara. So, Omkara is also one of the pranayamas. So, we should practice yogic jogging, Sukshma Vyayama, Asana, Pranayama by understanding and sincerely practiced. It has got immense health benefits. There are many of them, our type 1 diabetic boys and girls who are practicing, in whom we have seen the insulin requirement has come down. They are feeling healthy, they are feeling happy, they are feeling joyful. So, yoga for wellness. Every day we should practice together. All children and parents and healthcare providers, we should practice together. Now, prayer and meditation. We are not just this body and mind, we are the highest energy. We are children of Lord. Prayer is a tool to connect ourselves with our real self. Prayer is a tool to connect ourselves with our Lord, Ishvara. So, pray to God sincerely. Prayer helps to focus our mind, concentration. So, concentration is very important for every student to succeed. So, prayer and meditation should be practiced sincerely to develop concentration. So, now let us practice meditation. Sit in a comfortable posture.
Close your eyes, close your ears. Focus is on the breath. Breathe in and breathe out. Free from all outside thoughts. Focus yourself on the breath. Deep and long breath helps to calm down your mind. A calm mind helps in meditation. Close your eyes. Pray for the wellness of all. May all the beings, wherever they are, let them be happy and peace. By praying for the wellness of all, we get happiness, joy within. Offer our salutation at the feet of all great sages, saints, and teachers. By taking the blessings of the elders, we get our mind ready for meditation. We have to meditate within ourselves. The spiritual heart, Hridaya Akasha, where there is energy, light, all that is good, all that is pure is within us. Go and find that peace, joy within you. Just close your eyes, focus yourself on your breath, deep and slow, and try to find the joy within, happiness within. Slowly, again, offer your salutations to Ishta Devata and come out with namaskars to everybody. So, these are few techniques. Practice sincerely, daily, it becomes our habit. All good habits make a better person, a great personality. I wish all my children, type 1 diabetic, their parents, their healthcare providers, practice yogasana, pranayama, meditation for a better health. With this small session on yoga, humble request to all the people to practice yoga daily. Make it a part of your life. See you again. Namaste. Over to Anirban. Thank you, Swamiji. Now I request Mayank. We have this session on, I'll just share the screen so that people know where we stand. So we are going to start this session on experience sharing. So I would request Mayank to be online, and Mayank has lined up few of his friends who are going to speak to us today. So over to you, Mayank. Mayank, आप गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग मयंक, कैसे हैं? एवरीथिंग मैं फाइन? बहुत अच्छा हूँ सर, मैं बहुत अच्छा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। सो तो सर हाँ, अभी हमारे बीच में एक कीर्ति हैं जो हरिद्वार से ही हैं। वो अच्छा, अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन देंगी और बताएंगी। ओके। सो कीर्ति कैन स्विच ऑन द वीडियो. आई हैव मेड हर द co-host. हाँ, यस कीर्ति. कीर्ति is the person whom we all know. हाँ जी कीर्ति. Good morning, everyone. My name is Kirti Bhatia. I am 16 years old and studying in class 10th. I have diabetes from past 9 months. My treatment is going from Ramkrishna Mission Haridwar. Even I got diabetes in the lockdown period in May 19, 2020. I taught many new things with the diabetes, that how to maintain my blood sugars, how to do all things to maintain the blood sugars. I take insulin 3 times a day and check my blood sugars 3 times a day. I keeps my blood sugar in control by doing yoga, exercises, asanas. Yoga helps me a lot to build strength in my body, and it increases my flexibility, and it helps me a lot in in maintaining my blood sugars. I take a healthy diet, like fruits in the morning and salads in the afternoon and cooked meal in the night time. I will keep my blood sugar in control, and Maharaji and my diabetes educator also helps me a lot in maintaining my sugars. A special my hearty thanks to him and my diabetes educator to help me a lot. Thank you very much, everyone. Thank you, Kirti. So, with this particular pattern of diet, which is morning fruits and then afternoon salad and then evening one cooked meal in a day, you are
you are able to manage your insulin in a good way. It has Yes, come sir. down. Yes. Okay, Yes. very nice, very nice. So thank you very much, Kirti, for sharing your views or sharing your experience. हाँ मयंक जी. सर मैं आपको बताना चाहूंगा कीर्ति बहुत ज्यादा हमारे ग्रुप में एज ए मतलब वहां पर जो हमारा कॉन्फ्रेंस में रूम में होता था मीटिंग, वहां पर बहुत ज्यादा बार नहीं आई है क्योंकि इसको मौका नहीं मिला। उसके बाद फिर लॉकडाउन हो गया तो मीटिंग हमारी बंद हो गई। लेकिन ओके. उसके बाद भी मैंने देखा कि ये बच्ची बहुत एक्टिव है और मींस के जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं आई थिंक ऑलमोस्ट सभी मीटिंग्स में इसने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है। और ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में जैसे हमारा ग्रुप बड़ा होगा तो कीर्ति बहुत एक एज एक मेजर रोल इसमें प्ले कर सकती है ग्रुप को मैनेज करने में। Very good. तो ये बात इसकी बहुत अच्छी है। Very good. So I think you are being senior in the group. You should आप उनको कुछ अपनी तरफ से एडवाइस दो और उनको ज्यादा इन्वॉल्व जी करो। और आप कोशिश करो कि आपके जितने और बाकी दोस्त हैं उनको भी आप इस प्लेटफॉर्म में लेके आ सको। स्वामी जी ओके डेफिनेटली आपको एडवाइस करेंगे क्या करना है उसके लिए, है ना? जी सर। तो यू हैव एनीवन एल्स, और कोई है? जी सर अभी सर लक्ष्य है हमारे बीच में हाँ. लक्ष्य। तो उनको भी मैंने कल बोला था वो अपने बारे में थोड़ा बताएंगे सर। हाँ जी, हाँ जी लक्ष्य, आप अपना वीडियो और ऑडियो दोनों ऑन कर सकते हैं लक्ष्य. And also I can request all of them who have got good bandwidth, they can put on their videos so that we can see each other. Correct. Good Thank you. morning to all. Yeah. Hello. Yes, Lakshya. Good morning to all. My name is Lakshya. I am 22 years old and I do music and very much experience in my life. मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में भी करी हैं और अब जैसे लॉकडाउन जैसे मेरा लॉकडाउन के साथ एक्सपीरियंस हुआ है तो थोड़ा अच्छा भी हुआ है थोड़ा बुरा भी हुआ है। बुरा ये हुआ कि जो मैं करना चाहता था आगे मतलब जॉब वगैरह वो सब नहीं कर पाया, लेकिन अच्छा ये हुआ कि मेरे को और कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिला इस लॉकडाउन में। मैंने डायबिटीज़ को एक एक्सपीरियंस लॉकडाउन में डायबिटीज़ का एक नया एक्सपीरियंस मेरे को ये हुआ है कि मैंने अपनी हेल्थ पे थोड़ा फोकस किया तो मुझे एक चीज़ जानने को मिली है कि जैसे मैं जिम के पीछे बहुत भागा हूँ सर कि जिम करोगे तो मतलब एक माइंड में क्रिएटिविटी है ना कि जिम होगा तो अच्छा ही होगा। लेकिन जैसे मैंने योगा स्टार्ट किया है तो मुझे बेनिफिट ये मिला है कि मेरी मॉर्निंग शुगर जो थी ना वो हमेशा 150 से ऊपर ही रहती थी। अब जैसे मैंने योगा स्टार्ट किया है तो वो 80 से ऊपर और 90 से नीचे मतलब 84-85 तक रहती है। मुझे एक नया एक्सपीरियंस ये मिला है योगा से और मैंने कुछ बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस करी है। मैंने डाइट को लेकर काफ़ी एक नया चीज़ एक्सपीरियंस किया है कि मॉर्निंग में आप जितना हैवी मतलब मॉर्निंग होता है कि आपको फुल पेट एक डाइट लेनी है मतलब पेट भर के। उसके बाद जो आपका दोपहर का जो खाना होगा वो थोड़ा कम होगा और रात का और भी कम होगा। तो उससे एक डाइट प्लान अच्छा सेट हुआ मेरा। और मेरा वेट भी गेन हुआ है ऐसे करके। मेरा 55 था तो मेरा 61 हुआ है अभी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस हुआ है अभी सर हाल ही में। Oh, very good. Very nice to learn from Lakshya that he used to try do some gym and all those things, but his sugar, fasting sugar was around 150, and during this lockdown time he started doing yoga and pranayama that has helped him to make a better control on his food and on his activities, in which he is feeling better and also has gained weight. So we have to remember, if somebody wants to build a strong body, become with strong muscles as a boy, young boy and girl, yoga can do wonders. So one of the things what the science has proven, the stress hormones like cortisol, which are the key in increasing the blood sugars, shooting up the blood sugars. If those stress hormones can be taken care, you can bring down your blood sugars. So Lakshya is the example who started practicing yoga, and yoga helps in producing the stress relieving hormones, the endorphins, the serotonin. These are stress relieving hormones. So stress relieved, blood sugars came down. Stress increased, blood sugars go up.
It's not just the food, it's not just the insulin which takes care of your blood sugars, it is your stress level which also has a role in maintaining blood sugars. Yoga has a definite role in managing blood sugars. Laksha is a very good example. Thank you, Laksha, for sharing your experience. Anirban. Thank you, Maharaj. Yeah, thank you, Swamiji. And I know the stress part very well because I've been a I corporate. think you have to unmute Anirban. We are not able to listen to you. Yeah. Yeah, please. Can you hear me? No? Yeah. So, Swamiji, I know the stress part very well because I've been a corporate guy and we used to be very stressed. But I remember how yoga used to de-stress us. And this is exactly what you said. Cortisol and endorphin are the two opposite sides of the coin, hormones, which enable you to, perform and which enable you to reduce your stress. Because many of our corporate guys get type 2 diabetes because of stress. So stress is a huge element in everybody's life, type 1 or type 2, both. So now, Mayank, you have anyone else? Or we will go over to Madam Ruth Volena. Ruth is there. Ruth, can you switch on your video because I made you the co-host? Hello, sir. Hello, Good morning, Ruth. sir. Good morning, Ruth. Good morning. Good morning. Yeah. So we have two of our participants who are willing to share their experience. One is Bharati. She is actually from North only, so she will be talking to you in Hindi itself. So it will be of useful for others. Okay. Bharati. What is her device name? What is her device name? Her name is Bharati. She's logged in as Bharati only. Bharati. There is one Bharati, Anirban. Yes, Yeah. yes. I'll make her the co-host. Yeah, you can unmute yourself, Bharati. Hello, Hello, good morning, everyone. Good morning. Yes, Bharati. Myself भारती कुमारी. हमको पिछले 7 साल से डायबिटीज है और हम फर्स्ट टाइम अभी ट्रीटमेंट के लिए सीएमसी में आए. पहले तो नॉर्थ में ही ट्रीटमेंट चलता था, तो अभी 10 डेज से यहाँ पे है. यहाँ का मतलब माहौल और इंसुलिन लेने का तरीका और मतलब मेरा फीलिंग अभी 10 दिन से बहुत बेहतर है. पहले तो बस 2 टाइम लेते थे, अभी 4 टाइम हो गया है. पर पहले का जो मेरा रहने का तरीका और डायबिटीज कभी कंट्रोल नहीं रहता था, हमेशा 200 से ऊपर. अभी यहाँ की जो एजुकेटर है वो तो बहुत अच्छी है, हमको बहुत अच्छी मिली है, बहुत अच्छे से ट्रीट भी करती है, डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं. लेकिन अभी जो मेरा डायबिटीज है वो थोड़ा कंट्रोल पे है और फास्टिंग में भी 120 130 इस टाइप से. फिर दोपहर का भी अच्छा ही है 150 अराउंड, और फिर रात का भी. पहले ऐसा मेरे साथ कभी नहीं होता था. और मतलब खाना में भी कंट्रोल और एक्सरसाइज भी, वो सब बहुत अच्छा लगा और अभी थोड़ा बहुत अच्छा महसूस हो रहा है. वेरी गुड भारती जी. सो आप कहाँ की हैं? भारती, आपको दोनों पेंटिंग किया ना? हाँ, हमको फैशन डिजाइनिंग में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन ये इधर तबीयत खराब होने की वजह से हम सारा कुछ छोड़ दिए. अच्छा, आप कहाँ से हैं? झारखंड से हैं? हाँ. ओके. सो झारखंड में कहाँ से? हजारीबाग. हजारीबाग से हैं. अच्छा, बहुत अच्छा. हम भी रांची से बहुत करीब में हैं. अभी आपका सेहत अच्छा हो गया है, फिर अपना हॉबी सब स्टार्ट करो. ड्राइंग, सिंगिंग, सब पहले जैसे थे वैसे ही हैं. आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा. सीएमसी वेल्लोर एक बहुत बड़ा अस्पताल है दक्षिण भारत में, और वहाँ जो डायबिटीज़ डिपार्टमेंट है वहाँ डॉक्टर्स और रुत लेना मैडम जैसे जो डायबिटिक एजुकेटर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. आप वो जैसे बोलते हैं वैसे करने से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा. और अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखना और हॉबी स्टार्ट करो. ड्राइंग, अगले बार अपना एक ड्राइंग करके दिखाओ सबको. करेक्ट. तो मैडम रुथ ने, हाँ, very good, very nice. Yeah. Very good. Yeah, this is the dress. This is the dress designing she's doing. Oh, very nice. बहुत अच्छा. Oh, superb. Very good. Very good. So अभी तो टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड है. आप कहीं भी बैठ के कुछ भी कर सकती हैं. तो आप हमारा हेल्पलाइन नंबर में फोन कीजिए, हमसे जुड़िए, हम आपको हेल्प करेंगे इस चीज में. आप जो कर रही हैं ना, इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं. आपको कैसे वेबसाइट डिजाइन करना है, आपको यूट्यूब चैनल में कैसे लेके जाना है, हम आपको एडवाइस करेंगे और आप इसको आगे बढ़ा सकती हैं. तो हम भी आपके लिए कुछ छोटा मोटा मदद कर सकते हैं. बिकॉज हम लोग
डॉक्टर नहीं है, लेकिन हम लोग टेक्नोलॉजी वाले हैं, तो हम लोग आपको इस चीज में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? तो आप हमसे ये हेल्पलाइन नंबर जो चैट बॉक्स में है, आप उसको नोट कर लीजिए और उस पर आप फोन कीजिए, ठीक है? तो और मैडम रुत आपको कनेक्ट Yeah, करवा देंगे। she has done this in a very short time. Yesterday afternoon only I told her, and just in the later evening part she's done this. Thank you, Correct. Bharti. Very nice, very nice. So, Madam Ruth, you can get her connected to us, and we Yeah, will sure. help her in putting up her thing on a website or something. We'll give her some support in that area for sure. Okay. Next we have Archana Rajkumar. She will tell about herself. She's married, having one kid. So especially in the time when people grow up, they look for their spouse. What are the expectations as healthcare? What they should do? What was the guidance given? She will share her experience with. Okay. I have made Archana as co-host. Archana, you can unmute. Archana Rajkumar. Archana Rajkumar. Yeah, I have done that. Archana? Yes, she is a co-host. Yeah. I made Unmute करिए Archana Rajkumar. Put on your video, please. आपका वीडियो ऑन हाँ, yes, come on. हाँ जी. Hello, sir. I'm Hello. Archana from Krishnagiri. I'm type 1 diabetic from the age of 7. Now I'm 25. Just keeping my sugar levels control from my when I went to doctor in the CMC. So before that, I don't know how to keep my sugar levels control and all. And later on, I came to know. Then onwards, I'm keeping my sugar levels control and sugar levels control, and I'm doing my exercises regularly. And the very must thing I'm doing is I'm regularly I'm checking my blood sugars, and I'm doing exercise regularly, and I'm keeping my diet very good. So in my diet I'm following the things which the doctors and my diabetic educator which they told me. So it controls my sugar levels very good. And then I got married recently before 2.5 years, and I have a baby in 10 months old. Before marriage, I just declared my health issues to my husband. He just agreed, he accepted my things, and the very good, very important thing is he should accept me and me with my health issues. That is very important. So he accepted me with that, and he is supporting me very lot. So with his support, I'm leading my life now very good. And then I just kept my sugar level very control. My HbA1c level is 7.4 something in before planning for baby. So before planning baby, just I kept my sugar levels very controlled. Then when I planned for baby, it was very easy to do everything. Like maintain. If I don't want to follow anything newly, so I just already following. So I'm just continuing the same. So it kept my sugar levels very controlled, and it's very good for my baby too. So we should keep our blood sugar levels very controlled before planning baby. So I done that good, and I have a baby in 10 months now. He's very healthy now. He's very healthy. And one more thing, before marriage, we should declare everything. We should open up our mouth to our spouse, because his support is very, very important to us. And also, hello. Yes, we can hear you, Archana. So it's very important. So we should do that, and also we should keep our sugar levels very controlled before planning baby. That is very two things I just followed in my life, and I just
now my baby is very good, and me too. I'm very healthy now. So, very healthy, and I'm very happy to lead this life. And then now I'm keeping my blood sugars very good. Recent yes, very good blood sugars, and I'm doing sometimes we cannot do exercises like carrying baby. So when we taking care of our baby, we couldn't do exercises sometimes in the early months of 1 to 6 months of baby. When we taking care of that baby, we cannot sometimes. But we should balance our life. We should balance our life, and we should also do our things very good. By for that only we should declare everything, and we should open up everything to our family and our husband. Because it's very new life for us. Before we are living to our parents, they will always support us. But when we are entering into the new family, we should be the same there or there too. That will help us to keep our blood sugar good. So I did that very well, I think so. Because my my parents, how they supported us, and in this new family too, they are supporting me the same. So that is very That's fine a for me. great thing. And We're very happy to learn from you. The family support is very vital in managing blood sugars. So as long as you yes, are with your mother and father, they are helping you. So now when you plan for marriage, you should well in advance tell the family of the boy, so that they will help you. So we should be yes, always truthful. We should not hide anything. Then only we will not get hide. the right support. Right support Yes, will help you to manage your blood sugars, which you have done that. We're all proud of you. Thank you very much for your experience, Anirban. Yes. Thank you, Archana. And we look forward to you in the subsequent sessions also. And please take active part so that your other friends who have type 1 diabetes can also benefit from your experience. So thank you very much, Archana. So, Madam Ruth, I will now share the screen and I will share the videos what you had sent to us. And Yes, sir. Yes, sir. after that, we have a special guest, Dr. Anu Agarwal. She is waiting. So it will take another 3 minutes for me to play those videos, and then we'll go over Yes. to Dr. Anu Agarwal. Yeah. Okay. Thank you. So, Thank you, yeah. sir. Thank you. Thank you, Madam Ruth. Please be around so that you can hear Dr. Anu Agarwal. Yeah, She's we are very, here. We are here. yes, yes, ma'am. Yes. So this is Janvi, and I found her. Oh, that was Janvi. And then we have Sindhu. Hello everybody, I want to introduce you Miss Sindhu. She's 20-year-old, diagnosed with type 1 from the year 2014. Her free time she does beautiful mehendi like this. So you can see how beautifully she's done. And one more. And she also does bridal makeup and hairstyling. This is one of the bridal makeups that she did.
and hairstyling and bridal makeup and mehendi is her all-time hobby, and she's blessed with this talent. Thank you, Sindhu. Yeah, that was Sindhu. Then we have Lekha. I think we have heard about Lekha earlier. These are her paintings. So we have heard about Lekha. We have met her also earlier. She's a BDS student, and I think these are her paintings. So with this, we come to an end of our experience sharing and talent sharing section. We go over to now Madam Dr. Anu Agarwal, and I'll stop sharing my screen, and I will make her pin her video, and I would request Dr. Anu to unmute yourself. And over to you, Dr. Anu Agarwal. Before that, I'm forgetting before that, let me share your brief introduction to the people who have joined us today. So let me, yes, I have this. So today our guest speaker is Dr. Anu Agarwal. She's a clinical dietitian, nutrition expert, and she works in AIIMS Rishikesh. So this is her brief biodata. She is a radiation oncology. She is in the radiation oncology department, Rishikesh, AIIMS Rishikesh, since 2018, and she's taking classes of MBBS and MD and nursing students also. Her professional qualification: she is a PhD in 2017 in Department of Food and Nutrition. Then from Sam Higginbotham's University of Agriculture and Technology Services, Allahabad. Then she has earlier done her MSc from University of Allahabad, and she is a bachelor in home science, again from Jhansi, UP. So Dr. Anu Agarwal has gracefully agreed to talk to us and share her experience with people with diabetes. However, she is taking care of cancer students, but being a nutritionist, she also has patients who have diabetes. So I will now hand over to Dr. Anu. Yes, good morning, Dr. Anu. So nice to see you. Very good morning, sir, and thank you so much for introducing me. First of all, I want to thank to Swamiji who give to me a wonderful opportunity to present on such beautiful topic about type 1 diabetes and what is the main importance of nutrition in type 1 diabetes. So I'm so thankful to Swamiji and the whole team. Now I am sharing my screen. Yeah, please. I have some PowerPoint presentation regarding the importance of nutrition in type 1 diabetes mellitus. You can share screen now. You can come down below. I'm sharing my screen. Your screen is shared. Only thing you have to make it a slideshow. Slideshow, okay. Yeah, bottom down. Here, bottom. You can come to the bottom of the screen. Yeah. That's great. That's good. Yeah. So I would like to start with the nutritional management. What is the importance of nutrition in type 1 diabetes mellitus? So the important thing is that what we need to eat and when to eat for the best lifestyle management. With this, now the first thing is come to all our mind, what is the healthy eating? So healthy nutrition and healthy eating is knowing what and when to eat. So this is very important that whatever food we are taking in the diet, it should be very nutritious for the type 1 diabetes mellitus and for the good lifestyle management. सर एक्चुअली एक प्रॉब्लम आ रही है स्क्रीन पर ये कुछ
Hello. Hello. Yes. Yes. Dutta sir, can you listen me? Yes. Yes. We can hear you. सर एक्चुअली मेरी स्लाइड्स के ऊपर ये वीडियो आ रहा है, सो मुझे डेटा प्रॉपर दिख नहीं रहा है. इसको हाउ कैन आई मिनिमाइज? No, but we can see your screen fully. No problem. कंप्लीट हाँ, Yes. पूरा आई screen थिंक दिख रहा है. There is no problem. No problem with your screen. यहाँ पर मिनिमाइज का ऑप्शन था ये. ठीक है, डन. हाँ ओके, हाँ. Yeah. नाउ आई विल कंटिन्यू. थैंक यू Yeah. सो मच. Yeah. So, knowing what and when to eat is a very important part of the diabetes mellitus for the lifestyle management. Also, as we all know that different food has a different effect on your blood sugar level differently with every person. So, along with the diabetes, along with this, the second thing is most important: the healthy living in the management of the lifestyle. So with this regard, we will talk about the nutrition management, management of the meal plannings, and the lifestyle management in the diabetes. So nutrition management with the children of diabetes mellitus do not need any restrictive or a special diet. मैं सबको बताना चाहूंगी, मैं थोड़ा सा हिंदी में भी बात करूंगी क्योंकि हमारे साथ जो ऑडियंस है, जो बच्चे हैं, कुछ साउथ से भी हैं, कुछ नॉर्थ से भी हैं. तो रिस्ट्रिक्टिव डाइट या स्पेशल डाइट मीन्स वॉट एवर डाइट जो हम अभी जो डाइट में ले रहे हैं फूड ग्रुप्स के अकॉर्डिंग, उसमें हम जो भी चीज बाहर से लेते हैं अनहेल्दी फूड, दैट इज एक्चुअली स्पेशल. एंड डेली का अपना घर का खाना जो खाते हैं, दैट इज नॉट ए स्पेशल. सो इफ वी आर टेकिंग अ होम बेस्ड फूड, अ नेचुरल फूड इन अ कंप्लीट नेचुरल फॉर्म, उसको बहुत ज्यादा प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, देन दिस इज अ वेरी गुड एंड नॉट ए स्पेशल डाइट. द स्पेशल डाइट इज whatever we are taking from outside. So this should be advised to eat all the healthy foods in the right amount. Taking healthy food in the right amount, we can say in the right proportion, is very important to manage the portion size of every food. Like you can see in this plate the healthy eating and right amount. In this plate you can see the half part of the plate is filled with a lot of vegetables and the fruit. 1/4 part is filled with the other pulses and millets. After that, cereals and some types of like milk, curd, other product. So हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी प्लेट जो है खाने की, उसका आधा भाग सब्जियों से और फलों से भरा हुआ होना चाहिए. उसके बाद आप इस इमेज में देख के समझ सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे मल्टीपल टाइप्स ऑफ फूड हैं जिसको हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए. वी शुडंट स्टक ऑन द वन टाइप ऑफ फूड. लाइक केवल व्हीट की चपाती नहीं खानी चाहिए, केवल एक ही टाइप की सब्जी नहीं खानी चाहिए. वी नीड टू इंक्लूड lots type of the vegetables and cereals and pulses in the diet. And these are the harmful food like pizza, burger. The food contain the refined wheat flour. This is called मैदा. जो मैदे से बनी हुई चीजें होती है या जो पैकेज्ड फूड होते हैं, even packaged juices, all contain some coloring agents and some preservatives that are not healthy for the health. And this healthy practice should be practicing with the entire family for converting the healthy eating habits. Because as we all know that अगर किसी के घर में डायबिटीज भी है बच्चे को, तो they should not be panic, because ऐसा करने से healthy habits लाने से we can say कि आपके घर में, जैसे कहते हैं ना, बादलों के बीच में एक सिल्वर लाइन आ गया, तो ये की बहुत अच्छी बात है that आपके ओवरऑल फैमिली की हेल्थ इंप्रूव होगी. So whenever a child is diagnosed with diabetes, is that the overall health of all the family members would improve if these simple guidelines we will follow. So always we need to take positively. एंड जैसे कि अभी आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया अर्चना जी ने, उन्होंने बताया है कि अपनी फैमिली के साथ शेयर करना चाहिए सारी चीजें. एंड जितना फैमिली के साथ शेयर करेंगे, फैमिली विल बी सपोर्टेड विद यू. एंड these healthy guidelines family can also be followed. Now the important part is management of the meal planning. If you plan your meal accordingly, this will cost nothing but give you much. So planning is very important. For planning, we need
to focus first the availability of the local food. That means आप अगर साउथ में रहते हैं, नॉर्थ में रहते हैं, या जिस एरिया में आपका जो लोकल फूड है एंड सीजनल फूड है, ऑल फूड आर हेल्दी, तो आप अगर उसको नेचुरल फॉर्म में ले रहे हैं उस पर फोकस करना चाहिए. इन द मार्केट नाउ we have a lot type of like different types of food, processed food. तो इन सारी चीजों पर फोकस नहीं करना चाहिए. लोकल फूड जो भी है आपका उसको खाइए. सेकेंड थिंग इज दैट अफोर्डेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. This is not necessary that we have to spend more money for the healthy eating. इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उस फूड को चूज करें जो आपके आसपास है, जो सीजनल है, जिसको आप अफोर्ड कर सकते हैं इजीली. इट डजंट मीन दैट हमको बहुत ज्यादा पैसे इसमें लगाना है. इसके बाद बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एक बात आती है, प्लानिंग अ वीक मेनू. अगर आपने एक हफ्ते का मेनू प्लान किया हुआ है देन यू कैन फॉलो योर मील प्लानिंग वेरी इजीली, क्योंकि आप मार्केट से एक हफ्ते का राशन जो है उसको परचेज करके लाएंगे. राशन परचेज करने से एक हफ्ते का दो बेनिफिट होगा. एक तो कॉस्ट कटिंग भी होगा, टाइम भी सेव होगा, और दूसरा आपका जो प्लान है, जो मेनू है, आप उसको इजीली फॉलो कर पाएंगे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि जैसे जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में भी देखा है, 8 years ऑफ एक्सपीरियंस, बहुत सारे बच्चे या पेरेंट्स ये बोलते हैं कि घर में सामान नहीं था या मार्केट नहीं जा पाए. तो बिकॉज ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम इसके लिए प्लान नहीं करते हैं. अगर इसके लिए प्रॉपर प्लान करेंगे, परचेजिंग करके रखेंगे और घर में फूड की अवेलेबिलिटी है, देन उसको खाने में या कुकिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. सो parents can do this also and family members can do this for childcare health. These 4 points are very important for management of the meal planning. After that, careful meal planning is must for children and adolescents living with the type 1 diabetes mellitus. Because why it is important? Because planning of a proper meal will help to ensure proper growth and development of the child. जैसे कि हम सबको पता है कि ज्यादातर ये जो शुगर की बीमारी होती है जिसमें इंसुलिन लिया जाता है, ये बच्चों में होती है या एडोलेसेंट में होती है. एंड ये जो टाइम पीरियड होता है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का होता है फ्रॉम हेड टू टो. आपके अंदर भी जो हमारे मसल्स है वो सब बन रहे होते हैं, और वो सारी जो हमारे बॉडी की ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो हमारे मील्स से, फूड से मिलने वाले पोषण से होता है, न्यूट्रिशन से होता है. सो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप प्रॉपर मील प्लानिंग करें एंड प्रॉपर मील्स लें. एंड सेकेंड इज टू इंश्योर नॉर्मल ग्रोथ एंड प्रिवेंट ओबेसिटी. अगर आपने प्रॉपर मील प्लानिंग किया है तो ओबेसिटी को भी प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि अगर हम मील्स को बहुत ज्यादा स्किप करते हैं तब भी ओबेसिटी बढ़ती है. और मील्स को स्किप या डाइट को, जैसे आउटसाइड फूड खाते हैं, घर का खाना नहीं खाते हैं, या प्रॉपर पोर्शन साइज खाने का कंट्रोल नहीं किया है, या खाने में मल्टीपल टाइप्स के फूड को इंक्लूड नहीं किया है, तब भी ओबेसिटी बढ़ती है. सो प्रॉपर meal planning is very important to prevent the obesity, because we always said that prevention is better than the cure. तो अगर आपने पहले ही प्रिवेंट कर लिया, वो कंडीशन ही नहीं आ पाई, then that mean you are successful in your life. थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना इंसुलिन बच्चे को दिया जा रहा है या जो एडोलेसेंट है जितना इंसुलिन ले रहे हैं उसके हिसाब से फूड का इंटेक होना चाहिए. इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, इफ आई विल टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट, तो जो हमारे जो इंसुलिन के डोजेस बच्चे ले रहे होते हैं उसके साथ जरूरी है कि वो कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करें ताकि हाइपोग्लाइसीमिया में ना जाए, यानी कि ब्लड शुगर लेवल डाउन ना हो. क्योंकि ब्लड शुगर लेवल जब भी डाउन होता है ये ज्यादा डेंजरस होता है, एंड स्पेशली जब इंसुलिन की डोजेस ली जाती है और अगर प्रॉपरली मील प्लानिंग नहीं है तो ये कंडीशन आ सकती है. फॉर मैनेजिंग दिस कंडीशन वी नीड टू टेक अ प्रॉपर फूड इनटेक, अ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड विद द इंसुलिन डोजेज. And fourth is to regulate the intake of food item that would predispose to hypertension and other metabolic diseases. जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज जो है, अगर आप जैसे अभी तो सारे बच्चे जो अभी कनेक्ट है योगा कर रहे हैं, डाइट फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे इन चीजों को फॉलो नहीं करते हैं उनको टाइप 1 डायबिटीज के साथ और भी मेटाबॉलिक डिजीज हो सकती है. मेटाबॉलिक का मतलब होता है कि जो हमारे चयापचय से संबंधित बीमारी होती है. तो अगर वो सारी बीमारी होंगी जैसे कि हाइपरटेंशन है, यानी कि
ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारियां हैं, अदर हार्ट डिजीजेज हैं, तो उन सारी डिजीजेज को प्रिवेंट करने के लिए डाइट को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज टू प्रिवेंट द प्रोग्रेशन ऑफ सर्टेन कॉम्प्लिकेशन। आगे जब डायबिटीज के साथ, बिकॉज pupilla children and adolescent living with type 1 diabetes mellitus, तो आगे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, बिकॉज अर्ली स्टेज में स्टार्ट हो गया। अगर आपने प्रॉपर लाइफ स्टाइल फॉलो नहीं किया, योगा एक्सरसाइज नहीं किया, डाइट को रेगुलेट नहीं किया, तो मैनी कॉम्प्लिकेशंस you can suffer from many types of complication. And the meal planning is important to prevent hypoglycemia, as I told you. And hypoglycemia mainly occurs in the night and in the relation to the exercise. जब भी एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं या नाइट में इंसुलिन के डोजेस ले लिया, तो कई बार मिड नाइट में हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन आ जाती है। दिस इज आई एम टेलिंग यू बिकॉज दिस इज वेरी प्रैक्टिकल कि ऐसा होता है। तो नाइट की डाइट लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नेवर स्किप योर मील, हर एक मील लेना बहुत जरूरी है। द मील प्लान शुड बी फाइनलाइज, जो भी आपका मील प्लानिंग है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इट शुड बी फाइनलाइज्ड इन द कंसल्टेशन विद द पेशेंट एंड द चाइल्ड, बिकॉज चाइल्ड को है एंड पेशेंट विद देयर पेरेंट्स, क्योंकि पेशेंट को है तो उसके पेरेंट्स ही मैनेज करेंगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चा क्या खाता है, किस टाइम पर, उसकी ईटिंग हैबिट्स क्या है, उसकी टाइमिंग क्या है, what types of meal the child is like to take। अगर बच्चे स्कूल जा रहा है या बच्चे के किसी अदर एक्टिविटीज के लिए जा रहा है, डांसिंग, प्लेइंग, एनीथिंग, देन पेरेंट्स नीड टू प्लान अकॉर्डिंगली दैट उसकी किस टाइम पर क्या देना है। अगर स्कूल जा रहा है और आफ्टरनून में इंसुलिन के डोजेस देना है, तो लंच बॉक्स में ऐसा क्या फूड होना चाहिए दैट कैन प्रोवाइड अ कंप्लीट एंड अ बैलेंस न्यूट्रिशन। Ideally, there should be 3 main meals. Meal pattern कैसा होना चाहिए? I am discussing about. There should be 2 mid-meal snacks and to cover the peak hours of the insulin action, plus a bedtime snacks to prevent the hypoglycemia. So these 2 points is very important, that mid-meal snacks and a bedtime snack. We can plan a meal pattern, like in the early morning we need to take something just after get up. After that the second meal should be breakfast, and yes, breakfast should be like the king। तो आपको breakfast सबसे ज्यादा लेना है, जैसे कि अभी एक बच्चे ने भी बताया था कि ब्रेकफास्ट जो है काफी अच्छा वो लेता है, लंच उसके बाद थोड़ा कम लेता है और डिनर बहुत ज्यादा कम लेता है। तो बिल्कुल इसी तरह से होना चाहिए। बट द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट वी हैव टू प्लान अ मील पैटर्न अकॉर्डिंगली, दैट 6 to 7 मील पैटर्न अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। सो 3 मेजर मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, एंड 3 small meals, early morning, mid morning and evening snacks and after post dinner। तो आप इस सबको नोट कर सकते हैं और इस तरह से मील प्लान कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आपको प्रॉपर लेना है, जैसे कि हमारे जो भी दाल, चावल, सब्जी, रोटी होते हैं, सारे फूड इंग्रेडिएंट्स एंड अदर मल्टीपल टाइप्स के फूड इंग्रेडिएंट्स को इसमें इंक्लूड करिए। Now, what is the healthy eating? As I told you by explaining in this plate, and after this healthy eating, to eat a balanced diet according to your activity level. That means the intake, whatever we are taking food, it should be proper expand। तो intake जो भी कर रहे हैं उसका expenditure भी होना चाहिए, so that आपका जो blood sugar level है वो maintain रहेगा, and we can prevent the malnourishment, like obesity भी prevent कर सकते हैं, underweight भी prevent कर सकते हैं। And balanced diet, well, balanced diet का मतलब होता है that we need to include all types of food group in our diet with the adequate amount, like cereals and millets, pulses and legumes, all types of vegetables and the fruits. Our protein source we need to include like milk, curd, paneer. Fat and oils are also very healthy, so we need to include the fat and oil in our diet. Nuts and oil seeds. So sugar is not important for the type 1 diabetes mellitus patient, but yes, if they are suffering from the hypoglycemia, they need to take some amount of the sugar also।
तो जैसे मैं बात कर रही हूँ सीरियल्स एंड मिलेट्स, सीरियल्स का मतलब होता है जैसे कि गेहूं होता है, एंड मिलेट्स में बहुत सारे आते हैं, जैसे रागी होता है विच इज कॉल्ड फिंगर मिलेट्स इन द इंग्लिश, एंड बाजरा होता है, उसके बाद जौ होता है, जई होता है, या लाल वाला गेहूं होता है। तो मेक श्योर कि इस सारे तरह के गेहूं आपके डाइट में इंक्लूड हो। वी हैव अ लॉट ऑफ टाइप ऑफ पल्सेस एंड लेग्यूम्स। सो पल्सेस लाइक आपके पास मूंग का दाल, अरहर का दाल, चने की दाल, मसूर की दाल, एंड राजमा, छोले। बट व्हाट वी आर डूइंग nowadays that केवल अरहर का दाल बनता है या केवल मूंग का दाल बनता है। So try to include all types of pulses and legumes in your diet, and all types of vegetables and fruit. Every fruit is good for the diabetes, but we need to consider the proper amount with the proper timing. अगर आप evening में fruits ले रहे हैं या night में ले रहे हैं, that is not a healthy practice. So make sure कि आप fruits को और vegetables को अपने diet में जरूर include करें, but in the whole form. Juices form में ना लें या बहुत ज्यादा उसको soup form में ना लें, because बहुत सारे nutrients भी heat से denature हो जाते हैं. So try to include more semi-cooked and uncooked form of vegetables and the fruit. After that, milk and curd and paneer is very important, but in the pure form, अगर आप इसको घर का बना हुआ लेते हैं, तो it can be very healthy. And as I told you, to ensure the nutrition intake, we need to include a variety of the food in our diet. Now, in terms of nutrients, carbohydrates is very important. So to make sure the carbohydrate in your diet, carbohydrates are consumed as a fruits, vegetables, cereals, and legumes like peas, beans, and lentils, and milk. So carbohydrates is very important, but in the healthy form, we shouldn't take the carbohydrate like in the form of juices, in the form of refined व्हीट फ्लावर, यानी कि हम मैदा भी कह सकते हैं इसको, और जूसेस के फॉर्म में या पैकेज्ड फॉर्म में नहीं लेना चाहिए. द ट्रेडिशनल इंडियन डाइट बेसिकली हाई इन द कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज हम बहुत ज्यादा सीरियल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि व्हीट को काफी ज्यादा अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं, 5-6 चपातीज इन अ डे. सो व्हीट इज अ गुड सोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट. And I want to tell you that low carbohydrate diet are not recommended, as carbohydrate are important source for the energy, fiber, vitamin, and minerals. But we need to focus that we are getting a carbohydrate from which source. Like in this image, ये जो pulses वाला image है, आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें whole मूंग है, split मूंग है, and धुली हुई मूंग है. तो जब भी आप धुली हुई मूंग लेंगे, ये पॉलिश्ड होगी, इसके ऊपर हस्क नहीं है, दैट मीन उसके फाइबर नहीं है, और भी बहुत सारे सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स जो हैं, क्योंकि उसको धुल के उसका हस्क रिमूव किया गया है, तो वो फाइबर्स निकल जाते हैं. ठीक है, इसलिए मेक श्योर जब भी आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो आप होल फ्रूट से लें या होल पल्सेस से लें, जैसे कि ग्रीन ग्राम, होल ग्रीन ग्राम है यहाँ पर, या मूंग की दाल है, बट अमाउंट भी आपको साथ में कंसीडर करना है. So why taking carbohydrate is very important? Because carbohydrate are the chief nutrient in food that influence blood sugar level, and insulin needs to be matched to the carbohydrate intake rather than the calorie content at each meal. So for this, we need to include oats, barley, beans, lentils, legumes, soya bean, kidney bean, multiple types of nuts like almonds, walnut. Fruits are very healthy, kiwi, apple, orange. Try to make sure कि आप ज़्यादातर अपनी डाइट में citrus fruit जरूर लें, and in the whole form. And yogurt. What we need to avoid? White bread. And I would like to say that all types of bread, multigrain bread, immune enhanced bread, all types of bread we need to avoid. White rice is not healthy, or puffed rice also are not healthy, so we need to avoid white rice or the puffed rice. But बहुत सारे जगह पर, जैसे कि साउथ में, राइस इज ए स्टेबल फॉर्म. तो राइस को कैसे ले सकते हैं? We can boil the rice with a lot of water. After that we can destroy that water, discard कर देंगे पानी को, then starch can remove. राइस का जो स्टार्च है वो भी रिमूव हो जाएगा. आफ्टर दैट वी कैन इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ हर्ब्स, स्पाइसेस लाइक दालचीनी, जीरा, काली मिर्च,
इस तरह की जो स्पाइसेस है, लौंग है, जायफल है, इसको आप अपने राइस में इंक्लूड कर सकते हैं, सो दैट वो काफी फ्लेवर्ड भी हो जाएगा एंड न्यूट्रिशन भी उससे प्रॉपर मिलेगा। एंड ये सारी जो स्पाइसेस है वो ब्लड शुगर कंट्रोल करने में भी हेल्प करते हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज दैट कि राइस को यू कैन मेक अ पुलाव ऑफ राइस, सो दैट यू कैन ऐड मोर टाइप्स ऑफ वेजिटेबल, मल्टीपल टाइप्स ऑफ वेजिटेबल विद राइस, सो दैट राइस का अमाउंट कम हो जाएगा विद वेजिटेबल्स। सपोज आपने एक कटोरी राइस खाना है और आपने प्लेन राइस लिया है, दैट विल कंटेन मोर कार्बोहाइड्रेट, मोर स्टार्च। बट अगर आपने उसको पुलाव के फॉर्म में लिया है, वेजिटेबल्स के फॉर्म में लिया है, एंड तो उसमें आधा आधा चावल है, आधी वेजिटेबल्स है, दैट मीन आपका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट भी आधा हो गया, अदर स्टार्च कंटेंट भी आधा हो गया, और यू आर गेटिंग मोर एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर्स एंड अदर टाइप्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आल्सो। सो बाजरा, ज्वार, रागी, बेसिकली ये इसलिए मैंने मेंशन किया हुआ है क्योंकि ये जो तीनों चीजें हैं ये हमारी मिलेट्स हैं, दीज आर वेरी हेल्दी, बट यूजुअली ये मार्केट में अगर हम इनका फ्लोर बना हुआ लेते हैं तो काफी ज्यादा वो रिफाइन होता है, इसलिए उसको ना लेकर के आप इसको सॉलिड फॉर्म में लें एंड मेक श्योर कि इनका अमाउंट आप बहुत ज्यादा ना लें। इसको आप ऑल्टरनेटिव डेज पर ले सकते हैं। 30 ग्राम एक दिन में इंक्लूड करें अपनी डाइट में। 30 ग्राम का एक चपाती भी बना सकते हैं आप, या आप इसकी खिचड़ी भी बना सकते हैं, और आप इसको बॉईल करके नॉर्मली सैलेड के फॉर्म में भी आप इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स वगैरह इंक्लूड करके भी खा सकते हैं। मेज मक्का जो होता है वो अवॉइड करना चाहिए। सेमोलिना यानी कि सूजी इटसेल्फ जो है व्हीट से ही बनता है और उसमें भी बहुत ज्यादा कोई भी न्यूट्रिएंट कंटेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो भी फूड ले रहे हैं वो कितना ज्यादा न्यूट्रिशियस है, इसलिए सेमोलिना से अच्छा है कि आप रागी का, बाजरे का, या ओट्स का, या जौ का, बार्ले का चपाती ले लें, या इन सारी चीजों का चिल्ला ले लें। Cornflakes are not healthy, potatoes are not healthy because they are providing a empty calories, empty carbohydrate, not any other nutrients. So whatever food is providing a empty carbohydrate, empty nutrients, then you need to skip this type of food. So like mithai, ice cream, chocolate, sugar, plain rice, popcorn, honey, ये सभी चीजें अवॉइड करना चाहिए। नूडल्स ऑल्सो, नूडल्स, पास्ता। Now the main important nutrient is fiber. So fiber is very important to make our gut healthy. जैसे कि अभी जब से कोविड आया है तो everybody is talking about vaccination and the immune enhancement. So fiber basically help in this, क्योंकि अगर आपका gut healthy होगा तो आपका immune system यानी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी। तो फाइबर जो है हमारे पेट में को हेल्दी रखता है, हमारे गुड बैक्टीरियाज को एक्टिव करता है, तो इसलिए इसमें जरूरी है, जैसे कि हमारे इम्यून सिस्टम का 70% पार्ट जो होता है वो हमारे स्टमक से लगा हुआ होता है, तो जरूरी है कि फाइबर इंटेक को आप इंश्योर करें अपनी डाइट में। एंड indigestible carbohydrates present in food are designated as dietary fiber or unable carbohydrate. So a fiber intake कितना होना चाहिए बच्चों के लिए? A fiber intake equal to the is known to be beneficial. The traditional Indian diet is naturally high in the fiber content because if you are taking a salad, you will get a fiber. How we can increase the fiber intake in the diet? To increase the fiber intake, patients should be advised to consume whole fruits with skin and edible seeds, vegetables, legumes, oats, beans and whole grain cereals. जो फाइबर होता है सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के पील में पाया जाता है, या जैसे कि हम लोग जब आटे की चपाती बनाते हैं और आटे को सीव करते हैं, छानते हैं, तो उसका हस्क रिमूव हो जाता है, कई जगह पर उसको चोकर बोलते हैं, दैट इज एक्चुअली अ फाइबर। तो बोलते हैं कि मोटे आटे की चपाती खानी चाहिए, या फ्रूट्स को छिलके के साथ खाना चाहिए, वेजिटेबल्स को छिलके के साथ खाना चाहिए। जब भी कोई भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस या सीरियल्स आप छिलके के साथ लेते हैं तो ऑटोमेटिकली फाइबर कंटेंट आपको मिल जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए अलग से कोई फोकस करने की जरूरत नहीं। जस्ट रिमेम्बर कि आप जो डाइट ले रहे हैं वो हेल्दी ले रहे हैं, उसको नेचुरल फॉर्म में ले रहे हैं, कंप्लीट फॉर्म में ले रहे हैं। जितना आप फूड को प्रोसेस करेंगे उतना ही ज्यादा उसके न्यूट्रिएंट लॉस होंगे।
After that, fibers has a two types, soluble fiber and the insoluble fiber. So soluble fiber basically found in the beans, peach, oat plants, barley, apple, all types of the citrus fruit, watermelons and carrot. And ये जो fiber है that helps to improve total and LDL cholesterol level by binding to bile cells. कई बार ऐसे होता है कि टाइप 1 डायबिटीज के साथ बच्चों में या एडोलेसेंट में कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, यानी कि हार्ट की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, उनका एलडीएल बढ़ जाता है। एलडीएल इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल, ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। तो इसको कम करने के लिए हमें चाहिए कि हम ज्यादातर फाइबर्स खाएं। ओके, slow carbohydrate absorption by delaying gastric emptying, thus giving a flatter blood sugar level. जब भी हम फाइबर रिच फूड लेते हैं, डेट मीन उसका जो कार्बोहाइड्रेट है, फूड में जो कार्बोहाइड्रेट है उसका एब्जॉर्प्शन स्लो होगा। एब्जॉर्प्शन जब भी स्लो होगा, डेट मीन उसकी जो शुगर है वो हमारे ब्लड में धीरे धीरे बढ़ रही है। इसलिए ब्लड शुगर का जो लेवल है वो सडनली राइज नहीं होगा, वो ग्रेजुअली राइज होगा। मतलब आपके बॉडी में जितना इंसुलिन है वो उस कार्बोहाइड्रेट पर वर्क करता जाएगा, उस कार्बोहाइड्रेट का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होता जाएगा, इसलिए ब्लड शुगर राइज नहीं होगा। और एब्जॉर्प्शन होने का मतलब है कि आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, जो टिश्यूज हैं, सेल्स है, वहां तक वो कार्बोहाइड्रेट पहुंच रहा है। तो इसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि आपको लिथार्जिक फील नहीं होगा, आपको ऐसे फील नहीं होगा कि बहुत टाइम से कुछ खाया नहीं है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है टिश्यूज को, बॉडी के ऑर्गन्स को, ब्रेन को, सेल्स को, right? So fiber, soluble fiber can benefit to maintain and flatter blood sugar curve. And insoluble fiber are also very healthy, which is found in, again, whole wheat product, fruit skin, green beans, dark green leafy vegetables. About dark green leafy vegetables, I want to tell you, never process too much to dark green leafy vegetables. बहुत ज्यादा देर तक गर्म पानी में नहीं धुलिए इनको, या इनको गर्म पानी में उबाल करके उस पानी को डिस्कार्ड मत करिए, बिकॉज इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हीट सेंसिटिव होते हैं, यानी कि हीट से इट कैन बी डीनेचर। डेट मीन आपने उस वेजिटेबल्स को आपने खाया है, लेकिन उससे आपको एक सेटिस्फेक्शन मिला कि आपने खाया है, आपका पेट भर गया है, लेकिन उससे आपको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिला। So try to take dark green leafy vegetables in a semi-cooked form and in the natural form, raw form. Along whenever you are following a high fiber diet, there are so many precautions we need to follow. The first thing is that कि फाइबर इंटेक जब भी आप अपने डाइट में इंक्लूड करें, इट शुड बी इंट्रोड्यूस ग्रेजुअली। बहुत ज्यादा फास्ट अचानक से या हाई अमाउंट में फाइबर्स लेने स्टार्ट नहीं कर देना है। जैसे कि आई एम टेलिंग यू दैट फाइबर्स वी गेट फ्रॉम द होल पल्सेस एंड द फूड विच हैज अ स्किन। तो जब भी आप इसको ले रहे, मेक श्योर कि आपने एक बार में 30 ग्राम, यानी कि 30 ग्राम आपने होल पल्सेस लिया हुआ है, या आपने करीब 100 ग्राम के आसपास आपने कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लिया है विद पील। उसके बाद ग्रेजुअली आप इसके अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। आपको ऐसे नहीं करना है कि एक ही दिन में आपने हस्के वाली चपाती भी ले ली और साथ में होल मूंग दाल भी ले ली, या कोई एनी अदर दाल, और साथ में बहुत ज्यादा सैलेड खा लिया विद पील। अगर ऐसा करेंगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। साथ में द मेन थिंग वी नीड टू रिमेम्बर अबाउट द वाटर इनटेक। जब भी हम फाइबर्स को खाते हैं, फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकली अगर बात करें, आपने देखा होगा कि हम आटे, अगर आटा मोटा होता है तो हम उसमें ढेर सारा पानी डालते हैं और पानी उसमें सोक्ड होता जाता है, बट मैदे को अगर हम गूंथते हैं तो उसमें बहुत कम पानी लगता है, राइट? तो इसलिए ये जरूरी है कि आपने जितना फाइबर लिया है के लिए अगर आप उतना ही ज्यादा पानी नहीं पिएंगे तो वो क्या करेगा, आपको उससे कॉन्स्टिपेशन भी क्रिएट हो सकता है, इसलिए एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी आ सकते हैं, ब्लॉटिंग भी हो सकती है। इसलिए फाइबर के साथ वाटर इंटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट, and we need to provide some food that is rich in the calcium and other trace elements like iron and the zinc along with the fiber intake. So whenever you are taking a fiber and natural food itself, then you can complete your iron intake, zinc intake and the calcium intake naturally. Now the protein is very important for the growth and development, and it also helps. Ma'am, how many slides do you have more, ma'am? Just 1 second, sorry to. कितने slides हैं और आपके?
I think it's seven अच्छा, 7 slides or more. yeah, because we Yeah. overshot the time. 9:30 तक था हमारा. जी तो जी. I think ठीक है, आप if you can conclude it Summarize. quickly, yeah. I can summarize Okay. the 7 slides in one slide. That Okay. will be good. Okay. Yeah. जी. Yeah. So protein is very important for the growth and development. It helps to provide the strength to the muscles. So the protein-rich food, basically all types of milk, egg white, and if someone is vegetarian, the good thing is for the high quality of the protein, we need to take a curd and the paneer and the whey water. Whey water basically जब भी हम घर में पनीर को बनाते हैं, तो पनीर को बनाने के बाद उसका जो पानी बचता है, that is a whey water. So make sure कि घर में जो पनीर बनाया हुआ है उसका पानी भी आप लें, उसको डिस्कार्ड ना करें, and it will help to reduce the LDL cholesterol and the triglyceride also. After that, fat and oil, you can take everyone is thinking that fat is a culprit, but I would like to say that fat is very healthy and very important to take a diet, but we have to remember that what type of fat we are taking, like Yeah. Yes, ma'am. Your video got stuck. Hello? I think we lost our connection, Anirban. Yeah, looks like. Yeah, you can take forward. Yeah, Dr. Anu, you can just conclude because I think there is a problem of bandwidth. If you can. She's on mute. Yeah, you need to unmute. Yeah. Yeah, you can conclude. Statement. We have already crossed the time. Yeah. Yes, right. I am just concluding. Yeah. You can just give your concluding message. You need not go for the slide. Yeah. So just I want to say that include a healthy fat in your diet and healthy salt intake is very important, because you just need to take a 2.5 gram of salt to minimize the hypertension, and skip the salt which are because skip salt from other sources like papad, chutney, ketchups and all. After that, we need to follow some lifestyle modification, cut the sugar, work out regular, drink more water, lose weight, follow a very low carb diet, and watch a portion size is very important. Avoid the sedentary behavior, optimize your vitamin D level, eat a high fiber diet, minimize your intake of the processed food, and consider taking these natural herbs like cinnamon यानी कि दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, जायपत्री, and exercise regular. So I welcome your question. If anyone has any doubt, can ask to me. Yes, I think what we can do, Dr. Anu, is that we can make people ask the questions to our helpline. In case anyone has anyone put anything in the chat box? Right. Yeah, someone has asked for the presentation. We can do that. We can share the presentation if someone is willing. Okay. Then helpline number is already there, so people can connect with that. Yeah, people can connect with the helpline number. So one thing Dr. Anu mentioned about was on millets. I think I saw that she's speaking quite a lot on millets. So the availability of millets is a big challenge. So in our other program, what we do for integrated wellness, there is also a set of people who have been asking for millets. So we are trying to talk to a lot of manufacturers, because you spoke about ragi. Ragi is predominantly in the southern part of India, which is grown. Right. So in Karnataka especially. So we will try to coordinate. If anybody is interested, you can just put up a mail or a comment, or you can call us, and we will try to collate and we'll see how we can help you guys out. Okay. Right. So with this few words, thank you, Swamiji. Thank you, Dr. Anu. And thank you, Naresh, for being a part of this event. And thank you all the participants. I think you should be telling a lot of your friends to join this particular platform, because we are here sharing a lot of information, a lot of small ideas which may come. Today, the takeaway for me was the statement from
Archana, where she said that, you know, honesty is the best way in which one can lead one's life. And if you are choosing a life partner, I think it is very important that you share everything about you, about your challenges, and who knows, the entire family will benefit because of you, because they will all follow a good diet, they'll all follow a good lifestyle, and everybody will be living a very, very healthy life and happy life. So with this, thank you very much. With the last presentation I'll share, and then we'll close the session. Naresh, you have anything to speak? Anything you want to mention? Yeah, so we have our one of our senior members, Subramaniam Parmesh, in the call. Yeah, we'll be talking to all of you before the next session. Correct. To get what are all things further needed in this particular program, as well as how do we get more people connected with this program, how do we improve, how do we get more people. So please look forward to get a call from our staff, our senior colleague, Subramaniam Parmesh. He will speak Hindi as well as English and Tamil. Many of you are speaking Tamil. So he will talk all the languages. So he will connect with you. If you are less than 15-year-old or someone, he will try to talk to your parents to do what is the best we can do through this forum. So expect a call, don't get surprised. And he may say Serimed or Reach. So he's from both the organizations. Yeah. So he can get in touch with Madam Ruth and other senior caregivers, Dr. Anu. They can talk and they can try to get connected with the patients. Okay. So thank you very much. Thank you, Swamiji, once again. And I will close with this. Please join the next meeting on 28th February. And we have a nice, very energetic song. It'll make your day and it'll make your week. It'll make your Sunday. So we just celebrated the 125th birth anniversary of Netaji. And this is a song which was sung by Indian National Army, his army, and it is known as Kadam Kadam Badhaya Ja. This is the song which we used to also sing when we were in the school. So with this, let us close, and I'm sure you'll love this song.